Good morning, everybody. In previous lecture, we have discussed the construction of Kaplan tube, the structure of its runner, and in detail, we have studied the actual work of mechanical elements involved in the Kaplan turbine. हमने प्रीवियस लेक्चर में इस कैपलान टरबाइन को लेके इसके जो मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का इन डेप्थ स्टडी किया है। स्क्रॉल केसिंग क्या है, गाइडिंग वेन क्या है, एडजस्टेबल रनर वेन्स क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, हब क्या है, वर्ल चेंबर क्या है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस मैकेनिकल एलिमेंट in depth. At the same time, I have shown you the actual hub and adjustable runner vanes, how much large that particular mechanical structure is. We have seen in this particular picture where you can easily experience the hub and your adjustable vanes. Okay, vanes are adjustable, and I have shown you why the adjustment of vane is necessary. When there is a large flow of water, when there is a low flow of water, large flow में, low flow में इस रनर की एडजस्टमेंट होने की वजह से इफेक्टिवली आपका जो ये स्ट्रक्चर है हब और रनर का, ये इस कैपलान टरबाइन में वर्क करता है। I have shown you the shaft also, which is connected to the generator shaft, and through which we are generating the electricity. I have discussed that this Kaplan turbine we are using where the low head is available. That is very much important, because I told you that high head is not at all available everywhere. If you are going to take example in India, you can see that in Bhakra Nangal Dam, or in the dam which is constructed on Narmada River, Sardar Sarovar and that particular dams, these are having the large heads. Otherwise, many sites are situated at such a place where your head is very low or it is medium. At that time, Francis turbine and Kaplan turbine, these are the best two options which you can use for your electricity generation purpose. Today we are going to see the actual working of our Kaplan turbine. Okay, now first of all, हेलो सर। yes, सर लो हेड की हाइट क्या रहती है सर? when water is taken from that head through penstock, penstock यानी एक बड़ा पाइप है, और जहां से आपका वाटर आपके रिजर्वायर से निकलता है वहां वो पेनस्टॉक जो है वो फिट किया हुआ रहता है। वहां से वाटर जो आता है, दैट पर्टिकुलर वाटर फ्रॉम द पेनस्टॉक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द casing. Okay, and as yesterday we have discussed about the scroll casing, and scroll casing is nothing but the spiral shape casing. Okay, वो कैसा रहता है? स्पाइरल शेप का रहता है, और उसमें वाटर को पेनस्टॉक के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर वाटर इज कमिंग थ्रू योर स्पाइरल काइंड ऑफ द केसिंग, एंड it will be entered in the whirl chamber by passing through the guide vanes. guide vanes को guide vanes में से पास होते हुए वो वाटर whirl chamber में ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटर होता है। Okay, so here I have shown purposefully arrow, green arrow. It indicates that water from scroll casing is entering into the whirl chamber from that your scroll casing by passing through the guide vanes. guide vanes से पास होते हुए वो जो है वो whirl chamber में आ जाता है। When it is guided to move
टुवर्ड्स योर वर्ल चेंबर, उस वर्ल चेंबर में हब और एडजस्टेबल रनर वेन्स का स्ट्रक्चर हमने फिट किया है। एडजस्टेबल रनर वेन्स जो है वो ऊपर का जो फ्लो आता है उस फ्लो के अनुसार उसका जो ब्लेड का एंगल है, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो, एंगल ऑफ द ब्लेड, लो हेड होता है तो एंगल लो होता है, हाई फ्लो होता है तो एंगल जो होता है वो जो ज्यादा होता है, तो दैट इज एडजस्टिंग द एंगल। एंड during that particular period, due to the water which is entering inside the whirl chamber and the kinetic energy of that particular water, your blades are given motion, blade को motion दिया जाता है, and when blades are moving in turn your hub is going to start its rotation। और जब आपका हब मूव होता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लगाया गया शाफ्ट भी रोटेट होता है। दैट पर्टिकुलर शाफ्ट इज अटैच्ड टू द कनेक्टिंग रॉड ऑफ योर जनरेटर, और जनरेटर रॉड वी आर इन आवर रेगुलर लैंग्वेज वी आर कॉलिंग इट एज अ जनरेटर रॉड। तो जनरेटर रॉड को हम वो फिक्स कर देते हैं। उसके बाद जनरेटर रॉड जब मूव करना स्टार्ट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा हुआ रहता है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जस्ट डिफरेंस इज दैट दिस पर्टिकुलर हब एंड रनर स्ट्रक्चर is very much important over here, and whatever scroll casing is there, it has uniform cross section all over around in this particular turbine. If you want to see its animation, then also we have one good kind of the animation in front of us. It is easily available and we will try to put it. I want to put it for your kind reference over here. Okay, turbine. So here the picture in front of you is of Francis turbine, and it was asked, the first doubt was asked to me regarding with the water head. Actually, what is the water head? Here you can see the height of the water level from this particular point on the penstock. पेनस्टॉक जहां पाइप को टच करता है, ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे होता है या कभी कभी ग्राउंड के नीचे होता है। जहां वाटर एंटर करता है उस पॉइंट से वाटर लेवल तक की जो हाइट है, दैट पर्टिकुलर हाइट इज नोन एज अ वाटर हेड। सो हियर एट दिस पर्टिकुलर कॉर्नर you can see, you can experience, you can clearly observe the water head actually. So this is the wall of reservoir which is shown with the gray color. Okay, this is the wall of reservoir. डैम का वो क्या है, वॉल है, और उसके पीछे सारा जो वाटर है वो स्टोर किया हुआ है, और वहां एक इंक्लाइंड पाथ निकाल के उसमें से पेनस्टॉक फिट करके वो अपने टरबाइन पे इंट्रोड्यूस किया है। एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, क्रॉस सेक्शनल डिफरेंस इन द केसिंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में ये जो क्रॉस सेक्शनल डिफरेंस है केसिंग में, आप देख सकते हैं। सो यहां पेनस्टॉक का डायमीटर देखिए कितना ज्यादा है। जैसे जैसे आप स्पाइरल मोशन में वो वाटर मूव होते जाएगा, वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन कम 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 होते जाएगा। यू कैन सी हियर एज कंपेयर टू द पेनस्टॉक और एज कंपेयर टू द इनटेक इन योर केसिंग, द डायमीटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होते गया है। और वहां से आपको ये डायरेक्शन देखनी है वाटर का जो पाथ है उसको। अगर आप लेफ्ट साइड में मूव होते हैं, यहां लेफ्ट साइड में मूव होते हैं, तो यहां और कम डायमीटर आपको ऑब्जर्व होगा। यू कैन एक्सपीरियंस स्टिल वेरी लेस डायमीटर, और वहां डायमीटर कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका जो कुछ वाटर इनटेक ज्यादा लिया है, वो वाटर इनटेक वहां से जब आपके रनर पे थ्रो किया जाएगा,
So definitely it will put good kind of the energy on your runner, and runner will start rotating. And here in this Francis turbine, I have shown you the actual coupling between your turbine shaft and your generator shaft. I just want to show you here. You can see easily, just a minute. You can see easily over here, there is a coupling. एक ऐसा प्लेट है, वहां आई सेक्शन जनरेट हो गया है, आई जैसा स्ट्रक्चर, अंग्रेजी आई लेटर जो होता है आपके अल्फाबेटिक्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिक्स, उसमें जो कैपिटल लेटर रहते हैं उसमें से आई जैसा दिखता है, वैसे आई सेक्शन है. एक्चुअली दिस डिस्क इज नथिंग बट कपलिंग ऑफ योर टर्बाइन शाफ्ट एंड जनरेटर शाफ्ट. आपका जनरेटर का ऊपर से आते हुआ जो शाफ्ट है, वो शाफ्ट और आपके टर्बाइन से निकलने वाला शाफ्ट, इन दोनों शाफ्ट का वहां कपलिंग किया गया हुआ है. यानी कि अगर आपका जनरेटर का जो शाफ्ट है, वो आपके टर्बाइन का शाफ्ट है, वो जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, वैसे इमीडिएटली वो कनेक्ट होने की वजह से आपके जनरेटर का भी शाफ्ट मूव होना स्टार्ट हो देगा. और उसकी वजह से जनरेटर में जो कुछ मैकेनिज्म लगा हुआ है, दैट मैकेनिज्म इज आल्सो स्टार्ट रनिंग. ओके, सो लेट अस वंस अगेन try to see what happened. I have put this particular link in your study page, so you can see it afterwards when you will get time. So these white heads are indicating the direction of the water, and see, through draft tube this particular water is thrown for another purpose, or for irrigation purpose, or this water use. This particular water is thrown in your tail race area. This is a mechanism. See, runner is also moving, and in the same direction your generator shaft is also moving. Electricity is generated and it is transmitted through the wires and transformer system. So this is about the Francis turbine. Now I want to show you the Kaplan turbine. So this is the structure of the Kaplan turbine, and here you can see the working of Kaplan turbine. Many that animations and many videos are available as far as Kaplan turbine is going to be concerned, but we are going to see where within very less period of time we can understand the animation through animation about working of Kaplan turbine. I was discussing about the sites. Okay, so sites are actually generated with this particular mechanism. We are studying the geographical situation, and by taking that geographical situation into consideration, we are constructing the wall on the river. Okay, so here you can see water is flowing from one point to another, and in between there
the wall, it has been constructed, step by step wall, it has been constructed. See, this is the dam structure, or it is the obstacle due to which reservoir is going to be generated behind it. ये एक ऑब्स्ट्रैकल है, या हम उसे डैम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसके पीछे सारा पानी इकट्ठा होता है, एंड दैट विल बी एट अ हाई हेड. So you can see there is a water level difference. At one side of your dam, lot of water is stored, and on another side of the dam, there is a less water. And you know that when there is a difference in that particular level, so you can say that water which is stored in a more amount at one side of the reservoir contain more amount of energy. Okay, and when we will allow to flow that particular water, then you can utilize that energy, that is hydraulic energy, and by using it you can run the turbines. So this is the actual mechanism of the Kaplan turbine: hub, runner blades, and guide vanes, that shown over here. It is fixed in the casing. This is the generator which is attached on the top of your hub. So this is the adjustment mechanism. दिस इज द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम. टरबाइन के ऊपर पावर हाउस है, पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. So this is the main difference in between arrangement of the Francis turbine and Kaplan turbine. Okay, so here Francis turbine has shown in horizontal direction. कोई तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है कि सर दोनों टरबाइन ये वर्टिकल टरबाइन है, तो यहाँ फ्रांसिस टरबाइन हॉरिजॉन्टल दिखाया है, ऐसा क्यों? तो एक सादी सीधी सी बात है कि अगर ये टरबाइन का ये जो रनर का मैकेनिज्म है, अगर आपने टरबाइन को वर्टिकल कर दिया यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो रनर का मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल करके दिखाया हुआ है. अदरवाइज both turbines, Francis turbine as well as this Kaplan turbine, are vertical one. And see the runner difference in a runner mechanism. Okay, so this was the discussion related with Pranali Jahir. Your sound is on. Now I have muted. Okay, so this is the process, this is the actual working of your
Kaplan turbine. So yesterday we have drawn this particular diagram in our notebook. We have written its construction, and today it's our time to write its working. Okay, so I request you, please take your pen and notebook. Please be ready with it, and I will start dictating related with the working. Okay, are you ready? Should I start? Yes. Yes, sir. Okay, write down. First point, water is water is water is water is water is coming from water is coming from dam to turbine dam to turbine dam to turbine through penstock through penstock through penstock through penstock, full stop. It enters it enters in the scroll casing. It enters in the scroll casing. It enters in the scroll casing. Full stop. It will have pressure energy. It will have pressure energy. It will have pressure energy. Full stop. Point number 2. Water will enter in whirl chamber in whirl chamber passing over the guide vanes passing over the guide vanes passing over the guide vanes during this process pressure energy is converted into kinetic energy partially. Point number 3. Water
which is striking, water which is striking at the runner, will have hydraulic energy. Next point, this hydraulic energy is converted into mechanical energy. When water passes over, the adjustable runner vanes. Full stop. Due to mechanical energy, runner will have rotary motion. Next point, as turbine shaft is coupled with generator shaft, comma, mechanical energy is converted into electrical energy with the help of generator. Full stop. Next point, the water is then
taken out from turbine, taken out from the turbine by using draft tube, by using draft tube. It will send to the tail race, it will send to the tail race, it will send to the tail race by using draft tube, by using draft tube, by using draft tube, by using draft tube. Okay. So friends, now almost all contents of our this particular chapter, pump, compressor and turbine, we have discussed successfully. Okay, this is the first point. Second point, some of the questions are frequently asked related with those concepts, especially when we are going to discuss regarding with the turbine. Then the difference between Francis turbine and Kaplan turbine, differences between impulse turbine and reaction turbine, or comparison between centrifugal pump and reciprocating pump. Such questions are there which are frequently asked in the examination. Obviously, when you are going to write the descriptive answer, at that time those concepts are very much important, but you can write the differences or you can compare these both mechanical element when you will understand it properly. Now, if you have attended all the lectures, if you have written all the notes in detail, if you have drawn all the figures related with that particular concept, then you can easily chalk out, you can easily write the differences between this Francis turbine and Kaplan turbine, or impulse turbine or reaction turbine, and centrifugal pump and reciprocating pump. Okay, so my intention is to tell you, is to aware you about which kind of the question will come when theoretically going to discuss these all kind of the concepts in this particular chapter. So definitely in the next lecture I am going to provide you the differences between that. We are going to discuss it thoroughly, but it is just one kind of the homework that you will be very nicely prepared for the next lecture. First of all, we will discuss कि differences क्या क्या हो सकते हैं, comparison में जो points हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. We will discuss it, and then I will provide you brief differences in this impulse turbine and reaction turbine, Francis turbine and Kaplan turbine, centrifugal pump and reciprocating pump. Okay, now I am finding 52 students who are attending this particular lecture, and I will just mark the attendance of them. Okay,